that? Yes, sir. Yes, sir. So you understand that much now in the Green's function, Yes, sir. right? So the first case, I mean, we have decided that we will be doing Sir, आपका voice break हो वॉइस आ रही है अभी या नहीं? आ रही है सर। कुछ प्रॉब्लम है आई थिंक। ओके, बताना अगर प्रॉब्लम होगी तो। ओके, सो forms, in the forms, the first form is okay and it is clear, in which we had A and B, the conditions like this, and the boundary conditions here were followed by the Green's function, and L was Hermitian. Okay, and the boundaries conditions were such. Okay, second order differential equation, second order ordinary differential equation. Okay, so now we will switch to another form and just try to get whether we can solve that equation. So that will be in the form of initial value problem. Okay, so please write second form. So in second form, right, we may have the boundary conditions that are, so these were the 2 points, right? 2 different points. In first case, what were those 2 points which we did? 0 and 1. 0 and 1, right? Now the second case that I am going to take is initial value problem. Initial value problem, and I can take conditions like this in which some y0 is also 0 and y dash 0 is also 0. So you can see the situation will be like this. Okay, Yes, sir. so this will be the second form that I want to discuss. So just directly let us go into that and try to write the Green's function for that form. So that form is given by L of y, suppose L is operator. This is again a second order differential equation. So I am writing it like this: d2 y by dx2 plus y is equal to f of x. Suppose this is the form of the differential equation. And also, suppose we are given that y of 0 is 0 and y dash 0 is also 0. So this is the form that is given. Now tell me, what is px here? X is to 1. 1. Px is 1. Everybody can see that? Yes, sir. And also put L is equal to 0.
So what you will get? Sinusoidal. A sin x, so b cos x. D square plus Square plus 1 equals to 1 0. is equal to 0. So D will be Plus 0 minus iota. plus minus iota. So that means cos x and sin x. Cos x and sin x we have to write. Yes, sir. Okay. So please understand this. Again, make the same thing that I used to make. This is 0, this is infinity, and this is t. Okay. So if I want to write a function for x that is less than t, or we want to write it for greater than t. Okay. This can be again two cases now, because t is still here, Yes, sir. right? For less So than t sin x. sorry. For less than t sin x would be the solution. Yeah. So t. So again, the same situation has gone, and I have written that this x is less than t and x is greater than t. Okay. And y1 and y2 we have two things. So again, I will write my g of xt as some. अब देखो यहाँ पे थोड़ा जनरल फॉर्म में लिख रहा हूँ, वहां पे a और b की तरह क्लैरिटी नहीं है ना. So I am writing it like this: some c1 sin x plus some c2 cos of x. Okay, this is my Green's function. Is that okay? Yes, sir. So now you have two functions like cos x and sin x, and this c1 and c2 that I have written will be for. So g, if I write less than t, first of all, so you can see that y of 0 is 0, right? So less than t means I can be very, very close to 0 also. I Yes, should be sir. free to write it like that. So यहाँ पे एक लाइन लिख लेना ताकि आगे भी आपको पता रहे. For x less than t, for x less than t, g of x comma t is equal to 0, because y0 is 0. G of x comma t is equal to 0 satisfies the boundary condition G of sir क्या बोले x comma g of x comma t is equal to 0 satisfies the boundary condition and for x greater than t, I will write a general form. Gx comma t is some c1 t sin x and some c2 t cos x. Some c1 t sin x and some c2 t cos x. Okay. So now this we have to apply the boundary conditions here to get the values of C1 and C2, and we have two known properties. One is that at this point we should have the values equal, right? And Yes, the sir. derivative on right hand side minus on left hand side should give us 1 by pt. So these two conditions we have to impose on this. So let us do that.
So first of all, let us impose on this t the left hand side and the right hand side to be equal. That means the value of x, gx comma t है ना function. Yes, sir. तो इसके लेफ्ट वैल्यू क्या लिखूं? g of t माइनस लिख दूं? This should be equal to g of t plus. देखो ये नोटेशन समझ आ रहा है? हाँ सर. Yes, sir. Okay, this should be equal, and left side you have, on the left side you see that this is equal to 0, and on the right side this is c1t sin x plus c2t cos x. ये बता सकता है कोई why I have written c1t and c2t? क्योंकि सर GT हमने वेरिएशन माइनस वाला प्रूव करने के लिए. क्योंकि इसका जनरल फॉर्म अगर आपको याद हो तो I have written it fxht पहले ही. Yes, sir. पेजेस पलट के देखना जरा. अब del g by del t plus minus del g by del t minus should be equal to 1 by pt. जरा देखना यहाँ पे GT ओमेगा. हाँ सर, सही है सर. हाँ राइट साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड. सही है सर. ओके सर 1 by px 1 by pt. सर del g by del x minus Hmm. del g by del x minus Hmm. del g by del x Hmm. equal to 1 by pt था. Yeah, 1 by pt. So what it will become? Right hand side function is what? GT. Del g by del x था, sorry. Yes, Del sir. g by del x minus del g by del x. This was लिमिट on, पे थी ना मतलब this was on the right hand side and this was on the left hand side, and was equal to 1 upon pt. pt. Okay, so what is this equal to? The right hand side, c1t cos x plus c2t minus sin x is or minus 0. This is 0 Yes, sir. and this is equal to 1 over pt. Yes, sir. So now we have two equations, two variables. Yes. So let us solve them. C1t and C2t. Let us solve them. So if I add, can I add both of them? So I will get, adding will solve the purpose? No. Let us Substitution करना पड़ेगा. substitution ही करना पड़ेगा. So let us multiply this by cos x and this by sin x, and then subtract. Yes. Yes, So sir. c1 sin x cos x ये cancel हो जाएगा. Here it will become c2 cos square x. Cos square x. So c2 will become what? I'm subtracting. 1 up. And this all is happening at t. So substitute the value t also. C2t equals to 1. Wait, just wait. So this all is happening at t. So finally you have to put t na, after writing this.
Tell me what we will be getting. Solve it. minus sin x upon equal to cos x. What is value of C1 and C2? सर C1 का वैल्यू cos x है. सर C1 की वैल्यू तो सर 1/2 cos t आ रही है. C1t is cos t 1/2 cos t. Yes sir. and और C2t की आ रही है. C2t is minus sin t. एक बार जरा सॉल्व करना जरा. सर -1 sin 2t आ रही है सर. 2 sin t. 1 Let me just solve it for you. What is the first equation? C1t C1t C1 के साथ क्या था? एक मिनट. sin t. C1t sin t plus C2t cos t is equal to 0. And the second one, C1t cos t cos t minus C2t sin t is equal to 1. Okay. So if I multiply this whole equation by cos t and this whole equation by sin t, so this will, and I subtract. Okay. So this will cancel. What you will get here as C2t cos square t, और जब माइनस करूंगा तो ये ऐड हो जाएगा ना, सर प्लस sin square प्लस C1t sin square t is equal to -1 हाँ सर C2 से ही होगा ना. C2. So C2t will become and minus sin sin t, t हो जाएगा. minus Yes, sin t. ये हाई स्कूल मैथमेटिक्स है. So C2t is minus sin of Yes, sir. t. वो गलती कर गया सर, मैं डिफरेंशिएशन उल्टा कर दिया. हाँ वही रहा सर. And C1t you can now calculate as, put it in some equation, cos t. cos t. So for such a system, we got the Green's function as 0 for x less than t, and what we got for C1 is cos t, na? So cos t sin t minus cos t sin x. cos C1 t is cos t, na? So cos t sin x, cos t sin x and minus, ऐसे लिखता हूं, sin x cos t, sin x cos t minus cos x sin t, जिसको क्या लिख सकता हूं, sin of x minus t. So this is your Green's function. So now you can erase this, just write sin of x minus t, sin of x minus t for x greater than t. So if you again see your form, this was 0 here, t was here. So this side the Green's function is 0 and this side the Green's function is sin of x minus t. देखो समझ आ रहा है? So two forms समझ में? सर एक डाउट था, हाँ हाँ बोलो. यहाँ हमने दो इक्वेशंस जब कंसिडर किए तब हमारा जो cos x और sin x था, हमें C1 C2 t के फंक्शन है, इसके वजह से हमने लास्ट में वो t के फॉर्म में लिखे ना. Because we are Last में. doing everything at t, na? Bhai, when you are putting them equal, you are putting them at t. When you are just taking here minus here,
So that means you are ultimately doing at t, right? Yes, yes, sir. That is good question actually. Everybody understood that? Yes, sir. So when you are doing here, we wrote na कि we are doing it at limit t plus epsilon and t minus epsilon, where epsilon tending towards 0. Puneet? Yes, sir. No, sir, limit is not taken. No. Sorry, Kanchan? What? At writing test, we have subtracted derivative, but we have not mentioned limit as per Oh, I. because that is already understood, na? What Okay. you are writing this minus this. So just if you want to write, you can just write it because I gave under the properties that thing, na? Yes, yes, sir. So we are now using every time we will not write that big expression of limits. Okay. But if you Okay, want sir. to write, you can always write. Fine. तो दो फॉर्म में कोई डाउट हो तो बताओ, फिर से देख लो. लिटिल एब्स्ट्रैक्टनेस है तो थोड़ा सा आपको ये हो सकता है, बट इफ यू विल आस्क मी आई विल टेल यू. Two forms are okay. Yes. Okay. Then come to third form. So Puneet, first form was D by dx A, B dx. T. and T. Yes, sir. ये जो डायग्राम है, ये मतलब नोटेशन मैंने खुद पहले बिल्कुल समझ नहीं आता था, लेकिन जब ये मैंने बनाना शुरू किया तो स्टूडेंट्स को समझ आना शुरू हुआ क्या बात हो रही है. नहीं तो वो लेस देन ग्रेटर देन वो समझाने में तो बिल्कुल, एक तो ग्रीन्स फंक्शन की वैसे एब्स्ट्रैक्टनेस, राइट, Yes, और sir. ऊपर से ये लेस देन. बट जब से ये मैं बनाने लगा तो मैं फील करता हूँ काफी ज्यादा समझ में आने लगा. आप लोग बताओ अगर. सर हाँ भाई. सर मुझे भी एक छोटा सा चीज नहीं समझ सर PT इक्वल्स टू 1 कैसा आ रहा है सर ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है भाई. मिश्रा जी, तो PX इक्वल्स टू 1 तो समझ में आ गया PT px 1 है. ये तो यस सर इसमें तो ये तो क्वांटम क्वांटम मैकेनिक्स लगेगा. तो सर ये समझ में आ रहा है सर अगर px 1 है तो pt 1 कैसे है? अच्छा तुम एक काम करो, px 1 है, हाँ, यस सर यस इसको सर लिख लो e टू द पावर 0x. ओके सर तो pt को क्या लिखूंगा? e टू पावर 0t ओके. इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 इसकी 1 अच्छा x की जगह ओके सर थैंक यू सर या अगर और कोई ऐसे लिखना चाहते हो तो भी ठीक है. क्यों भाई? ओके. यस सर चलो ये इसमें मत डालना, अब इसको साइड पे कर दो. क्या डिस्कशन चल रहा है? और ठीक है शिवेश, यस सर उसको हटा दो भाई. ये देखो जरा ये क्या डिस्कशन चल रहा है. ओके सो सर फर्स्ट वाज A to B. पुनीत Yes, sir. and Deepak. Yes, sir. First form was A to B. Yes, sir. Second form is 0 and rest. Infinity. 0 and rest. And third form is, so if you want to write the names, the first one was when you have fixed AB. Second one was, so this was simple second order.
Then you had initial value problem, and this is at bound. So this is initial value problem. And this is boundary at infinity. This is simple problem in which both A and B were known. बोलो भाई, ये थोड़ा broadly समझ में आ रहा है या नहीं? आ रहा है? So boundary is at infinity. अब जरा ये भी करते हैं. So ये जो बाउंड्री टू इन्फिनिटी वाली प्रॉब्लम है, अब जरा इसको समझ लेते हैं, तो कम से कम एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा. बाउंड्री एट infinity. चलो इसमें जरा एक इक्वेशन कंसीडर करो, d2 by dx2 plus some k square and some psi x suppose or y is equal to gx. This is the boundary, this is the differential equation that I want to consider. We have studied such equations many times. Now, what is the general solution? First of all, tell me what is L? Who will tell? y by dx square, d square plus k square. So what will be D? SIK. 0 plus minus ik? Yes, sir. Now, for this, the boundaries are at infinity. So we will write the solutions as in this form, e to the power I kx and y2 क्या हो जाएगा? Minus I kx. Okay? You know that ना, इस sin और cos की जगह ये भी लिख सकते हैं भाई. Ultimately, you have two m1 and m2. So I can always write e to the power m1x and e to the power m2x. And that can be transformed into sine and cos. Sometimes I derive during ordinary differential equation. कि वो दोनों एक ही हैं, right? m1 और m2 की जगह अल्फा प्लस आई बीटा और अल्फा माइनस आई बीटा रखकर मैं derive कर देता हूँ. So we have boundary at infinity and we have the wave traveling to infinity. So please write, in this case, the boundary is at infinity so our wave is traveling, our outgoing wave is traveling to infinity. So if you write the solutions about जो मैं वहां पे t ले रहा था यहाँ x dash ले रहा हूँ, okay? So इस तरफ है infinity और इस तरफ है minus infinity. देखो जरा ध्यान से. This is the t, new t, which I am just जानबूझ के मैं x dash से represent कर रहा हूँ. We can represent it by t also. And one side you have plus infinity and other side you have minus infinity. So if you want to write it for x positive, that means this side. So we write the Green's function on the two sides, right? So this side should be taken care by so मैंने y1 किसको ले लिया है?
let me write it like this. This is y1, this is y2, suppose. Okay, so this should be y2 and this side should be y1. If you take x negative और x positive, so both sides में outgoing बनाने के लिए मैंने y2 को भी पॉजिटिव रख लिया है कि अगर ऊपर x पॉजिटिव रहेगा i के पॉजिटिव, एंड y1 को भी पॉजिटिव रख लिया है. ओके, and my Green's function will become gx dash is equal to, who will tell? First is x less than x dash. Tell me. Sir, e to the power minus I kx, e to the power I kx prime. So x less than x dash will be a. How we write it? y1 A- y2 now. हाँ sir, e to the power minus I X, kx. so it will be y1. बोलो भाई. X sorry, x less than x dash will be a y1. If x is less than x dash, it will be a y1x and No, I- y2 x dash, Yes, sir. and x greater than x dash will be a, bolo, A y1 x dash y1 x dash y2 x. and y2 x. y2 x. This will become the Green's function. And what is value of px in this case, Mahima? Can you tell? What is px here? 1. Sautan? 1 sir. 1. And pt will be, what will 1. be pt? It will be also 1. ठीक है शिवेश? Yes, sir. Yes, sir. So what is w? कौन बताएगा? So y1 y2 y1 dash y2 y1 y2 y1 dash. चलो जल्दी से वैल्यू बताओ ना. टू आई के. Yes, sir. So what will be value of capital A? 1 upon pt w. 1 upon 2 ik. Yes, sir. That means minus I by 2k. Put it in the place of A. Can I erase this and put it? Yes, sir. So क्या आएगा भाई दीपक? Minus I by 2k Yes, sir. minus I by 2k. Sautan, it is okay? Yes, sir. Yes sir. And can you just write the places of y1 and y2 again? So what will be g of x comma x dash? Can I write them? What was y1 e to the power? Minus e I to the power kx. minus ikx. When x is less than. Yes sir. So if you don't mind, I would just prefer to write it like this. Exponential I and अरे भाई exponential I X dash minus x minus x dash like this. So if x is less than x dash, सर Sir, बाहर K एक होगा माइनस होगा. k होगा. बाहर माइनस है ना यहाँ पे.
सर आई नहीं के सर, साथ ई के साथ हम्म एक्सपोनेंशियल के साथ आई के नो नो, वहां पे क्यों माइनस होगा? एक्सपोनेंशियल में एक के भी होगा ना सर, के का टर्म। हाँ, के का टर्म होगा आई एक्स माइनस एक्स डैश। सर y1 का वैल्यू तो e टू द पावर माइनस आई के एक्स है, हम्म एंड y2 का वैल्यू तो e टू द पावर प्लस आई के एक्स प्राइम है। हम्म तो सर जब मल्टीप्लाई होगा सर, एक ऊपर एक माइनस आएगा ना, e टू द पावर माइनस आई। सर ये आप x लेस देन x डैश के लिए लिख रहे हैं ना अभी? एक मिनट रुको। सपोज x इज ग्रेटर, ओके, देन इट इज सो दिस विल बिकम पॉजिटिव। ये ठीक है सर। तो करेक्ट नहीं है? फॉर x ग्रेटर देन x प्राइम इट इज। अरे भाई, तो दोनों पे ही सेम होता है। लेस देन के लिए नहीं सर, लेस देन के लिए अलग आया ना। ये सर अरे सौटन, यस सर। what are you saying? X greater than x dash, are we getting e to the power I x minus x dash or not? हेडिंग सर। And for x less than x dash, what we will get? E to the power minus I x minus x dash. So that is okay ना? यस सर। हाँ सर, ठीक है सर। Immediately ask this. So देखा कितने ब्यूटीफुली हम लोगों ने ग्रीन्स फंक्शन लिख दिया। सो अगर ये तीन मेजर फॉर्म आप समझ गए हो तो ग्रीन्स फंक्शन का काम खत्म है, बस थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कुछ और प्रॉब्लम्स की। के होगा। हाँ, के होगा। सर एक डाउट है। हम्म सर यह जरा फिर से बताइए, वो y1 y2 हमने जो चूज किए ना वो कैसे किए? क्या क्या फिर से बोलो। y1 y2 जो हमने चूज किए, y1 इज इक्वल टू e रेज़ माइनस i के x। भाई देखो, ये बाउंड्री एट इंफिनिटी है, ठीक है? यस तो सर। आउटगोइंग वेव शुड बी गोइंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। दिस इज एक्स डैश क्या हुआ करता था? सोर्स हुआ करता था, राइट? यस तो सोर्स से टुवर्ड्स द बाउंड्री, राइट? सो इफ यू राइट इक्वेशन लाइक दिस, e टू द पावर i kx माइनस ओमेगा टी ना, अगर कोई मान लो ओमेगा से ऑसिलेट कर रही है, ओके, सो बट दैट पार्ट इज मिसिंग हियर। e to the power I kx you write, so that means it is traveling towards the positive x, right? And this side also it should be traveling towards the boundary. So if I don't take it like this, so both will be traveling towards the boundary, okay? One dimension hai na, so in one dimension what are the boundaries? One is plus infinity and another one is minus infinity, okay? ओके सर, गॉट इट। Yeah. तो इसीलिए जो क्वांटम मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की टफ स्कैटरिंग प्रॉब्लम है, दे कांट बी सॉल्व्ड विदाउट ग्रीन्स फंक्शन, राइट? यस सर। सर तो मेरा एक जिस डाउट। हाँ सर ये जो अलग अलग कंडीशन है, हाँ इसका जो ग्रीन फंक्शन हम निकल है, तो हाँ ये इस कंडीशन के ही वैलिड है। मतलब इस बाउंड्री कंडीशन के लिए ये टाइप का ग्रीन फंक्शन होगा, राइट? डाउट क्या है? मतलब सर मतलब पिछले वाला जो तुम पढ़ते हो लीनियर इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन, पार्शियल पढ़ते हो, क्वांटम मैकेनिक्स में हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ते हो, तो ये नहीं पूछते कि सर ये हाइड्रोजन एटम में भी लगा दें? यस सर। भाई फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन अलग है ना, बाउंड्री कंडीशंस अलग हैं, तो हाँ उसके सॉल्यूशंस डिफरेंट नहीं होंगे? यस यस सर। उसको तुम किसी और तरीके से क्यों देख रहे हो? दे आर द डिफरेंशियल इक्वेशन, दे बिलोंग टू अ सिस्टम एंड बाउंड्री कंडीशन, सो ऑब्वियसली दे शुड हैव डिफरेंट फॉर्म्स, राइट? यस सर। ओके, तो if this much is okay, then in next class we will solve some different type of problems and we are done.
सो आई जस्ट बिलीव कि आपको ये 3 तरीके के फॉर्म्स समझ आ जाए। इसमें कोई डाउट होगा तो दोबारा भी पूछ लेना। ओके, Thank you, sir. थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you, sir. थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू।